Assalamu alaikum. This is Sidra from Yashal English House, and today I am here with an amazing video on IELTS reading blanks, fill in the blanks. So the topic is crop growing skyscrapers. Crop growing skyscrapers. अब आपके पास question क्या है कि choose no more than 2 words. Whenever you do your listening test or IELTS reading test, we have word limits, so be careful while reading the instructions. First read the questions carefully before starting your test, because there is a word limit, like you can say write no more than 1 word or write no more than 2 words or write just 1 word. So if you exceed the word limit, your marks will be deducted. Okay, now we will start our question. We have blanks. The topic is crop growing skyscrapers, indoor farming. अब ब्लैंक्स हमने कैसे करनी है? फर्स्ट वी विल रीड ऑल द क्वेश्चंस बिफोर मूविंग टुवर्ड आवर पैसेज पे जाने से पहले हमने क्वेश्चंस रीड करने. द फर्स्ट वन इज सम फूड प्लांट्स इंक्लूडिंग डैश आर ऑलरेडी ग्राउंड इंडोर. सो इंडोर इज आवर कीवर्ड. हमने जो अपने इंपॉर्टेंट मेन वर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं, उनको साथ में अंडरलाइन करते जाना है. वर्टिकल फॉर्म्स वुड बी लोकेटेड. Location किसकी? vertical forms, meaning that there would be less need to take them long distances to customers. Okay, question number 3, vertical forms could use methane. So here the keyword is methane from plants and animals to produce such. अब methane किस लिए यूज होती है? To produce what? The consumption of dash would be cut because agricultural vehicles. So here vehicles कौन सी? Agricultural vehicles. This is an important word. The fact that vertical forms would need dash light. कौन सी light? Sunlight, artificial light, whatever the light is, वो हमने mention करनी है. One form of vertical forming involves planting in which are not fixed. वर्टिकल फार्मिंग की एक फॉर्म है, कैटेगरी है, दैट इज नॉट फिक्स्ड, जहां पे हम प्लांटेशन करेंगे. अब जो फिक्स्ड मीन मूवेबल, ठीक है, उसको आपने सर्च करना है. द लास्ट वन इज द मोस्ट प्रोबेबल डेवलपमेंट इज दैट फूड विल बी ग्राउंड ऑन डैश इन टाउन्स एंड सेंटर्स. सो वी हैव read all the questions, we have underlined the keywords, important words हमने अंडरलाइन कर ली है. अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स आवर पैसेज और हमने अपने जो वर्ड्स अंडरलाइन किए इनको हम पहले सर्च करेंगे. आफ्टर सर्चिंग द वर्ड्स हमने ये देखना है कि क्या हमें इससे रेलिवेंट कोई मटेरियल मिल रहा है या नहीं. अगर मिल रहा है वहां पे रुक जाए, अगेन रीड दैट स्टेटमेंट एंड फाइंड योर आंसर. सो द फर्स्ट थिंग इज इंडोर. अब देखें, दिस इज पैराग्राफ नंबर 1. we will start from paragraph 1. by the year 2015 nearly 80% of Earth's population in this. Okay, here we have indoor farming. अब हमें वर्ड मिल गया इंडोर फार्मिंग. अब we will read the question again. के क्वेश्चन क्या था? some food plants including dash are already ground indoors. कि कुछ प्लांट्स जो ऐसे including dash, अब स्पेसिफिक एक टर्म हमने मेंशन करनी है कि वो ऑलरेडी इंडोर ग्राउंड हो चुके. The concept of indoor farming is not new since the hothouse production of tomatoes. अब देखें क्या चीज उसने मेंशन की है, tomatoes, कि ये कंसेप्ट न्यू नहीं है बल्कि टोमेटोज और ऑलरेडी ग्राउंड देयर. सो हम यहाँ पे अपना आंसर क्या लिख लेंगे? टोमेटोज. ओके, द सेकंड वन इज वर्टिकल फॉर्म्स विल बी लोकेटेड इन डैश. लोकेशन हमने सर्च करनी है. अब वर्टिकल फॉर्म्स को पहले सर्च करें क्योंकि ये ब्लैंक से फिल इन द ब्लैंक्स. इट मींस कि अगर आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल गया आंसर उसका, तो आपको सारे सीक्वेंस पे मिलेंगे. फिर उस अगर एक यहाँ से मिला, आप इसी पैराग्राफ को आगे रीड करते जाए. ओके, द वर्ड वर्टिकल फॉर्म इज हियर. हमारा क्वेश्चन क्या था? वर्टिकल फॉर्म्स वुड बी लोकेटेड. कहाँ पे होंगे? द कंसेप्ट ऑफ अ वर्टिकल फॉर्म है क्या? वन सच प्रपोजल इज फॉर द वर्टिकल फॉर्म. Vertical form is the concept is of multi-story buildings in which food crops are grown in environmentally controlled condition. ठीक है, ये वर्टिकल फॉर्म को ही डिफाइन कर रहा है. सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ अर्बन सेंटर्स. सो हमारा मेन वर्ड क्या था? वर्टिकल फॉर्म्स एंड लोकेटेड. कि लोकेशन क्या बता रहा है? सो लोकेशन उसने बताई. सिनोनिम यूज हुआ लोकेशन के लिए सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ अर्बन सेंटर्स.
हमारा आंसर अब क्या आ गया यहाँ पे, अर्बन सेंटर्स, अर्बन सेंटर्स. ओके, द थर्ड वन इज वर्टिकल फॉर्म्स यूज मीथेन. अब हमने कीवर्ड जो फाइंड आउट करना है दैट इज मीथेन, कि मीथेन का वर्ड कहाँ पे आ रहा है. अब आप इस पैराग्राफ को रीड करें. ओके, यहाँ पे कोई वर्ड ना मीथेन का वर्ड मेंशन है, neither they have mentioned the word plant or animal, कोई वर्ड मेंशन नहीं है. सो हम आगे अपना नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे. This portrait of vertical farming claim many potential advantages. Okay, let me scroll down this one. अब देखिए यहाँ पे this photos of vertical farming, all the word again and okay, parts, plants, they have mentioned the word methane here again, and yes, tractors, क्योंकि आपने एक word वहां पे देखा था. In the next question, that is consumption of dash would be cut because of agricultural vehicles. अब एग्रीकल्चरल व्हीकल्स क्या होती है. एक तो आपके पास जैसे बाइक, कार्स, ये चीजें आ गई, दैट आर नॉट एग्रीकल्चरल. दे हैव मेंशन्ड द स्पेसिफिक टर्म हियर दैट इज ट्रैक्टर्स. ट्रैक्टर्स अब क्या है, ट्रैक्टर इज एग्रीकल्चरल व्हीकल. सो हमने इसको अंडरलाइन किया. ओके, द फर्स्ट question number 3, vertical forms could use methane from plants and animals. Methane from plants and animals to produce what? Although this system would consume energy, it would return energy to the grid via methane. अब वो कह रहा है कि एनर्जी कैसे रिटर्न करेगा, थ्रू मीथेन. सो अब मीथेन क्या प्रोड्यूस करती है यहाँ पे हमारे पास, एनर्जी. एनर्जी. The consumption of dash would be cut because agricultural vehicles would be unnecessary. Consumption of dash. अब क्या कह रहा है कि agricultural vehicles unnecessary, और किस चीज की consumption? Okay, यहाँ पे था हमारे पास ट्रैक्टर. हमने स्टेटमेंट दोबारा रीड करनी है. It would also dramatically reduce fossil fuel use by cutting out the need for tractors. ठीक है? It means कि वो क्या कह रहा है? Again, the word is fossil fuel. The consumption of fossil fuel would be cut because agricultural vehicles क्या करती है, would be unnecessary. Okay, the next one is the fact that vertical forms would need dash light. अब हमने light का word search करना है कि light कहाँ पे mention है. A major drawback of vertical farming, however, is it plants that okay, here the word is light. Light का word given है, और क्या कह रहा है, drawback क्या है? Drawback is that the plant require artificial light. The fact that vertical forms would need dash light is a disadvantage. तो उसने mention किया, the light is artificial. Question number 6. One form of vertical farming involves planting in dash which are not fixed. कि जो fixed नहीं है, that is movable. अब देखें, we will search the word vertical forms and vertical farming, and the word is fixed, जो चीज ना हो या movable या इस तरह का कोई synonym कहीं पे use हो रहा हो. Multi-story facility that natural light generating light would be prohibited. One variation of vertical farming, variation in one category of vertical farming that has been developed in grow plants is stack trays that move. Okay, here the word is move. अब यहाँ पे क्या word आ गया, move. हम इसी word की search में थे कि या तो फिक्स नहीं है तो इट मीन्स दैट दिस इज मूवेबल होगी. और मूवेबल क्या चीज है, वी हैव स्टैक्ड ट्रेस यहाँ पे आपने मेंशन कर देना. द लास्ट वन इज द मोस्ट प्रोबेबल डेवलपमेंट दैट फूड विल बी ग्राउंड ऑन डैश. कि फूड कहाँ पे ग्रो करेंगे, फूड विल बी ग्राउंड ऑन डैश.
food will be grown and dash. Okay. Stacked phrase आपको यहाँ से मिले, food will be grown, growth की बात कहाँ पे हो रही है? Vertical farming is an attempt to address the undoubted problems that we face in producing enough food for a growing population environment. This, while it's possible that much of our food, देखिए food का word mention है, ground in skyscrapers. So last word हमारे पास क्या आ गया again, skyscrapers. अब जितनी हमने ब्लैंक्स किया, आपने एक चीज को नोट किया होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको सीक्वेंस वाइज मिली है. सीक्वेंस वाइज मीन कि एक अगर क्वेश्चन आपको पैराग्राफ नंबर ए से मिल रहा है तो ऑनवर्ड आप देन बी रीड करें या उसी को फर्दर कंटिन्यू करें ताकि आपको ब्लैंक्स मिल जाए. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स हैज टू डिफरेंट कैटेगरीज. नंबर 1, एक तो ये आपको ये क्वेश्चन की फॉर्म में दी जाती है 1 2 3 4 5 6, बट जो आपके पास मोस्टली समरी कंप्लीशन होती है कि कंप्लीट दिस समरी, या अगर क्वेश्चंस आपके एक ही पैराग्राफ में आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो सारे आपको एक ही या 2 पैराग्राफ से उठा के दे दिए जाते हैं. वो फिर आपको 1-2 पैराग्राफ से सारे आंसर्स मिल जाते हैं. यू हैव नो नीड टू रीड ऑल द पैराग्राफ्स फॉर फाइंडिंग योर ब्लैंक्स. सो ओके, द नेक्स्ट थिंग इज फिल इन द ब्लैंक्स. आ गई आपके पास प्लस हमारे पास एक और कैटेगरी है, दैट इज समटाइम्स आपको ये करना पड़ता है कि क्वेश्चंस आपको दे दिए गए, यू हैव रेड ऑल द क्वेश्चंस, प्लस आपने सिलेक्ट करना होता है आंसर्स. आंसर्स आपको यहाँ पे दे दिए जाते हैं. यहाँ पे अभी मेरे स्क्रीन पे तो नहीं शो हो रहे, लेकिन नीचे साथ में आंसर्स गिवन होते हैं. आपने जस्ट वहां से एक वर्ड पिक करके तो ब्लैंक में लिखना होता है. बट वो भी आपने कैसे करना है, मोस्टली ये होता है इन द लास्ट थर्ड पैराग्राफ यू कैन से फॉर द एकेडमिक ट्रेनिंग, और वो भी आपने पैराग्राफ को सीक्वेंस वाइज रीड करके फाइंड करने होते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.